Om Jai Guru. My dear student, today we will discuss the passive, the very important grammar in English, the passive. Very important but very easy. If we concentrate only two or three things, then we can do it easily. So first of all, we should have the knowledge about tense, then verb forms. So these two things are very important for doing passive. We should have the knowledge about tense, structure of a tense, then verb. Verb means verb V3 form. That is called past participle form of the verb. We should have these two things, we should have the knowledge on these two things. Then it will be easy for us to do passive. Okay, let's start passive. If a sentence, suppose I have written here sentence, I am eating rice. So first of all, what sort of sentence it is? It is a sentence of on present progressive, because the be verb am is here and main verb eat is in ing. So I am eating rice, the sentence is in a present progressive. If I write I eat rice, the sentence is in a present simple, because as per present simple structure, subject plus V1, subject plus be verb plus main verb ing. So this is progressive, this is simple, present progressive, then present simple. ଏଠି ଆସିଲା present progressive, subject plus be verb plus main verb ing, present simple, subject plus v1. First of all, we discuss these two things. What we will do in these two sentences if the sentence is in the two forms. First, we will discuss about present simple sentence. The example, I eat rice. I eat rice. The basic structure of a passive is the object becomes the subject. Object becomes the subject. So first of all, our work is we should find out what the object is. Sentence object ta case ame seita ko first find out kariya ko padiyo. Kahe na passive ro basic structure रे आछी object becomes the subject. तेणु आमको first object ta को detect करिया पड़ियो. ताले एई सेंटेंस रे हमर ऑब्जेक्ट आछी केसे ना राइस, तो हमर रूल्स कहउची ऑब्जेक्ट होबो सब्जेक्ट. ताले बर्तन हमें कोन करिबा ना राइस टा को हम सब्जेक्ट पोजीशन को आनिबा. ताले राइस टा को हम सब्जेक्ट पोजीशन को आनिबी. राइस, the sentence is in present simple. When the sentence is in present simple, we use be verb. Be verb is am are. As per the subject, subject जदि singular थिबो we use is, subject plural थिले we use are. So here rice is singular, we use is. Okay, so here the subject is rice, then it is singular, so first comes singular verb, rice is. Then verb always is in a past participle form. Past participle form or जोटा का हमर को আছে V3 form. That means eat, ate, eaten by me. So this is the passive of a present simple sentence. जे कोनोसी present simple sentence था, first rule होची आमे sentence रे object टा को detect करिबा. Object अनुसार be verb आमे बसैबा. जदि object singular थिबो ताले singular verb बसैबा, जदि object plural थिबो ताले plural verb बसैबा. तापर काम होची verb रे आमे सबले past participle form यूज करिबा. तेनो एठी मु it रखितले it रो eaten करिछि. Then by me. So this is the passive of a present simple sentence. Now we will discuss present progressive sentence. I am eating rice. So here the object is also rice. So object comes to subject position. Rice. Rice is singular. So here the verb comes. It is subject I thila, verb is am. But here the subject is rice. So the verb becomes is. Rice is.
If the sentence is in progressive form, while doing passive we use been. We use been. So here rice is being. Verb always is in past perfect, past participle form. So eating achi, eaten by me. So this is the passive form, passive of a present progressive sentence. Like all present progressive sentence will be done like this. The main thing we will use in present progressive, this one. Then all other rules become same. Object becomes a subject. Verb always in past participle form, जोटा का मैं V3 form कहबा. किंतु एई गोटिए टर्म ए being term टा होची main thing in present progressive. Understand? Then come to present perfect sentence. I have eaten rice. So again same object that comes as a subject. Rice singular, so we will use here have or has. Then if the sentence is in perfect, so here we will use the verb form been. Here we will use been. Verb is always in the V3 form, but in present perfect verb already is in V3 form, so there is no changes. We just put that verb while doing passive. By me. So this is the passive structure of a present perfect sentence रो एटा होची passive structure. बुझियला? आ perfect progressive sentence रो प्रायतः passive structure आसेन बा तार passive करा जाय. ठीक सही बोले हमें पढेबा past simple sentence को. Past simple sentence. For example, boys played cricket. Boys played cricket. So here the object is cricket. Rules, as per rules, object become subject. So cricket. Boys played, subject plus V2 form. That means the sentence is in past simple. Past simple thele be verb watch where भितरु as per subject हम यूज करिबा. ताले एठी असला क्रिकेट. क्रिकेट ले सिंगुलर आसी गला. ताले एठी हम यूज करिबा watch. Verb is in also in past V3 form because of played. V3 form is played. Played by boys. Understand? Like that we will do past progressive sentence passive. Boys were playing cricket. Boys were playing cricket. Boys were playing cricket. So the sentence is in past progressive because be verb then main verb ing. Again same rule, object as your subject. Tale cricket. Cricket is singular, so here the verb will comes watch. Cricket watch. As per progressive first earlier हम कहिछि जे being यूज करिबा त एठी मध्ये हमें सही being यूज करिबा. Cricket was being played by boys. Cricket was being played by boys. Understand? Now we'll come to past perfect sentence. Boys had played cricket. Boys had played cricket. Boys had played cricket. So here the object is cricket. Cricket had. Cricket had perfect structure asla. We will use been. So cricket had been played by boys. Played by boys.
So this is the basic structure of a passive of if the sentence is in a tense. Is in the structure of a tense. That means the structure is in present tense, present simple, present progressive, present perfect, past simple, past progressive, past perfect. Now we will come to future time or modal or using modal. For example, boys will play cricket. Boys will play cricket. Same object. So हमें इजीली नहीं आसवा कौन ना क्रिकेट आसीगला हमर सब्जेक्ट को क्रिकेट विल मोडाल आसीगला तापर एठी हमें सिंपली कौन लगेबा ना जोटी मोडाल ऑक्सिलरी लगी पैसिव करिवार थिबो सेही जगह हमें सिंपली सेही मोडालिटी को रखिबा एवं तापर हमें खाली बीटीए यूज करिबा तापर हमें कौन करिया ना बीटीए यूज कर जो मोडाल थिबो सेही मोडाल को रखि करी तापर हमें केवल बीटा को यूज करिबा सो क्रिकेट विल बी प्लेड verb always past participle से जो स्ट्रक्चर था ना के पैसिव माने verb always past participle cricket will be played by boys तो ठीक सही बोला जत्ते मोडाल हमर अछि कैन कुड शाल शुड विल वुड मे माइट ऑट मस्ट नीड डेयर ई जत्ते प्रकार मोडाल ऑक्सिलरी थिबो हमर किछि चेंज करिया नै जो बेसिक स्ट्रक्चर हमर सेही स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देन verb रो past participle फॉर्म केवल सिंपली आमे मोडाल परे बीटी को यूज करिबा एति को होची हमरो काम आ बेसी किछि काम नै त पैसिव सो इजी जदि आमे ई बेसिक दि तीनटा दिनसो मन रखि दबा तले पैसिव हम पई कष्ट होबनी बहुत इजीली आमे पैसिव कर दबा अच्छा ठीक अछि ये जतक सेंटेंस रो पैसिव को आमे कले ये सबुडा को होची हमर डिक्लेरेटिव सेंटेंस बा जोटा आमे स्टेटमेंट सेंटेंस कहिबा सेही सेंटेंस रो पैसिव बर्तमान आमे आसीबा इंपेरेटिव सेंटेंस रो पैसिव imperative sentence कौन ना ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड एडवाइस सजेशन ये सब सेंटेंस में हम इंपेरेटिव सेंटेंस जोटा रे कि वर्ब रो स्टार्ट हेते फॉर एग्जांपल ओपन द डोर इट्स एन इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं सो इंपेरेटिव सेंटेंस को हम केमति पैसिव करिवा ना हमर एठी असला ऑब्जेक्ट की आसे द डोर नहीं हमर स्ट्रक्चर कहूची ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट किंतु एठी हमें पैसिव कला बेले गोटे स्ट्रक्चर यूज करिया पिले दैट इज लेट और बी ए स्ट्रक्चर हमें यूज करके करिवा ताले कोन होबा हमर पैसिव द डोर जो ऑब्जेक्ट अछि आसीला सब्जेक्ट एटा फर्स्ट स्टार्ट करिवा हमें फर्स्ट हम स्टार्ट करिवा लेट ऑब्जेक्ट हमर सब्जेक्ट होबो किंतु से हम स्टार्ट करिवा कोथरो ना लेट रु स्टार्ट करिवा ताले लेट द डोर बी opened verb always past participle so here open past participle तेनो एठी हमर स्ट्रक्चर टी लागु छै फर्स्ट स्टार्टिंग रे हम लगेबा लेट ऑब्जेक्ट पर verb जगह हम लगेबा बी तेनो एति को छै हमर इंपेरेटिव सेंटेंस रे पैसिव रो काम तो let the door be opened but sometimes there is some sentence which refers to moral obligation for example help the poor although it is an imperative sentence eta ote imperative sentence amaro imperative sentence ro passive structure hochi let be structure kintu ei sentence re ame let be lageba na why na because this sentence express some moral obligation तो एठी ame कोन करना amaro moral obligation जो modality लगे ame से modality लगे कि एठी करिवा तेनो एठी ame कोन करिवा the poor should be helped the poor should be helped काहे केटा हला ना एटा ओटे हमर मोरल ऑब्लिगेशन पोर मानको सहाय्य करे एटा ओटे नैतिक वर्क हमर ओटे तेनो एई स्ट्रक्चर हमें शुड मोडालिटी हमर यूज करा जाय मोरल ऑब्लिगेशन रे तेनो हमें शुड मोडालिटी को यूज करिबा तापरे बी देई के हमें वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करिबा बुझियला ये होची हमर इंपेरेटिव सेंटेंस रो पैसिव स्ट्रक्चर नाउ वी विल कम द वेरी इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज क्वेश्चन सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस रा हमें केमती पैसिव करिबा सो फॉर एग्जांपल व्हेन डिड यू पोस्ट द लेटर so what sort of sentence it is
इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हेन डिड यू पोस्ट द लेटर। अच्छा यही सेंटेंस को आम केमिति पैसिव करवा फास्ट आम कौन करवा ना आपको आम कन्वर्ट करदे गोटे स्टेटमेंट सेंटेंस को आपको आम कन्वर्ट करदे गोटे स्टेटमेंट सेंटेंस को जनरली मु लिखिबी यू पोस्टेड द लेटर on Saturday. You posted the letter on a Saturday. You posted the letter on ଆମର actually question ଯେତେବେଳେ you ରେ ଥାଏ ଆମେ sentence ଲେଖିଲା I ରେ କରିବା ରେ I posted the letter on Saturday ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ passive structure କରିବି ବୋଲି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ you subject ନେଇକି ମୁଁ ରଖିଛି। তাহলে ইউ পোস্টেড দ লেটার এটা একটা স্টেটমেন্ট সেন্টেন্স তুমি সন্ডে সটরডে দিন লেটরটি পোস্ট কর বা মু সটরডে দিন লেটরটি পোস্ট করি তাহলে এটি কোন করিবা বর্তমান আমি একটু জেনারেল প্যাসিভ আনিয়া জেনারেল প্যাসিভ আনলে আমার অবজেক্ট কি আছে দ লেটার তাহলে আমার আসি গলা দ লেটার ইউ পোস্টেড পাস্ট সিম্পল আসলে আমার ওয়াজ ওয়ার ভিতরে ইউজ করা যাব তাহলে এটি আমার হলা দ লেটার সিঙ্গুলার তেণু আমি এটি কোন আনিবা ওয়াজ দ লেটার ওয়াজ পোস্টেড অন সটরডে বর্তমান আমার এটা প্যাসিভ আসি গলা দ লেটার ওয়াজ পোস্টেড অন সটরডে। আচ্ছা এই সেন্টেন্সটা কো যদি মু ইয়েস নো क्वेश्चन করিবি আমার ইয়েস নো क्वेश्चन কোথরে স্টার্ট हुए অক্সিলারি স্টার্ট हुए তাহলে সিম্পলি মু কোন করিবি ওয়াজ টা কো আগু নেই আসিবি না না তাহলে মোর কোন হেই দিব সেই সেন্টেন্সটা ইয়েস নো क्वेश्चन কলে মোর হেই দিব কোন না ওয়াজ the letter posted on Saturday আসিগলা yes no question was the letter posted on Saturday understand so এই জিনিসটা কো जो on Saturday টা आंसर পাইয়া পাই মু এটা কো কোউথরে क्वेश्चन করিবি when রে क्वेश्चन করিবি তাহলে সিম্পলি মু কোন করিবি না এটি Saturday টা কো ওমিট कर देबी on Saturday টা को ओमिट कर देली या पूर्व लगे देबी when was the letter posted हे गला सेशन मु क्वेश्चन मार्क दे देली बुझियला एई भली हमर एई जो सेंटेंस तला when did you post the letter एठी हम ताको पैसिव कर देबा कोन आसिला when was the letter posted सिंपली जेती इंटरोगेटिव सेंटेंस तो किछि पैनिक होबा नाही आमे ताको कोन करबा ना प्लेनली हम गोटे सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट कर देबा बा गोटे स्टेटमेंट सेंटेंस को कन्वर्ट कर देबा स्टेटमेंट सेंटेंस जेमती पैसिव हुए सेमती कर देबा तापर ता गोटे एस नो क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देबा तापर कोन करना जो डब्ल्यूएच वर्ड ता थिबो ता पूर्व हम सेही डब्ल्यूएच वर्ड टी को बसै देबा एति को होछ हमर काम आ बेसिक किछि कष्ट नाही एतरे। अच्छा आ गोटे दिनस रोछ हमर तले हु रे क्वेश्चन थिबो फॉर एग्जांपल who killed the snake who killed the snake who killed the snake ताले एठी हमें कोन करिना सर आग स्टेटमेंट को नै आसे someone killed the snake someone killed the snake ताले आको में पैसिव करे बर्तन हमर ऑब्जेक्ट के आसीबो द स्नेक न नै ताले मुनी आसी ऑब्जेक्ट द स्नेक सेंटेंस ता को टेंस रे मोर अछि पास्ट सिंपल ले स्नेक ता आसी गला मोर सिंगुलर ताले मेठी कोन आनी बी वर्ब आनी पास्ट रो बी वर्ब ताले मोर एठी आसीबो कोन वाज द स्नेक वाज तापरे वर्ब रो कोन पास्ट पार्टिसिपल किल्ड ता लास्ट आसीला कोन किल्ड the snake was killed by someone ताले someone by मोर आसीओ कोन by whom ताले आउ तो एटा को शेष रखिबि ना डब्ल्यूएच वर्ड मते क्वेश्चन करिया रहबो ताले मु एटा कोठि नै आसी फास्ट को नै आसी ताले फास्ट को नै आसले कोन हला क्वेश्चन करिबि। अच्छा एठी by whom टा रहला
मु एटा गोटे yes no क्वेश्चन बर्तमान करी yes no क्वेश्चन कले कोन होई जिवो was the snake killed by someone आसी गला कि yes no क्वेश्चन कर देली बर्तमान ए जो someone दिन छटा रहिला by someone अछि ताले मु एठी किए मारला ताले मु सेम से wh वाटा नै आसी ताले एठी मु कोन कर देबी फास्ट मु लगे देबी कोन ना by whom टा को फास्ट को नै आसी स्टार्टिंग को नै आसी ताले कोन हला by whom was the snake killed हेगला सिंपल एत्ते की दिन आ कुछ नहीं याको हम आ गोटे प्रकार मध्य करि परिबा whom was the snake killed by understand so एत्ते को हमर इंटरोगेटिव सेंटेंस रो पैसिव that's all for today in the next class we will discuss how to convert compound sentence and a complex sentence to passive